मैं कहूँगा एक अच्छा डिस्प्ले है बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेशी फ़ैन ये वाली परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़े अरसे से अंडर परफॉर्म करते रहे आईसीसी इवेंट में, और जिस तरीके से इस इवेंट में वो आ रहे हैं, एक उनकी टीम नज़र आ रही है। गो के स्टार्ट उनका अच्छा नहीं था, यूएस से वो सीरीज़ हारे, मोरल डाउन था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो स्पिरिटेड परफॉर्मेंस दी, हार गए, लेकिन मैंने उसी वक्त कहा था कि ये वो स्टार्ट होता है जब आपकी टीम एज ए टीम बिलीव करना शुरू कर देती है। तो इन्होंने उस जोन में आए हैं और आज की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि आपका जो डिसीजन होता है ना, वो टॉस जीत के बॉलिंग और बैटिंग फर्स्ट करने की रीज़न होती है। वो रीज़न ही होती है कि कौन सा बैटिंग फर्स्ट करके या बॉलिंग फर्स्ट करके आप अपनी टीम को बेस्ट पॉसिबल चांस देते हैं टू विन द गेम, कि जिसमें आपके चांसेस ज़्यादा है जीतने के। आप ये नहीं देखते कि यहाँ पे पहले 3 ओवर का अगर फ़र्ज़ करें मुश्किल हालात हैं या 6 ओवर के मुश्किल हालात हैं, वो पहले 6 ओवर के मुश्किल हालात बर्दाश्त करना ठीक है, ना कि चेस करते वक्त 120 बॉल या 20 ओवर पूरे फेस करना आपके ऊपर प्रेशर है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क और जोन है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आप एक इनिशियल मुश्किल पीरियड अपने अगर बर्दाश्त कर लें तो आपको बाद में कंफर्ट मिलता है, या बाद में आप जीतने के चांसेस बढ़ा लेते हैं। तो ये उन्होंने किया। अगर आप देखें तो उन्होंने मुश्किल जो शायद नीदरलैंड के लिए मुश्किल था, उनको ये लगा कि उनको यहाँ पे उनकी बॉलिंग एक्सपोज कर देगी उनकी टेक्निक को, लेकिन जो रिप्लाई दिया उनके बैट्समैनों ने, जिस तरह तंजीद ने ऊपर से अटैक किया, फिर आउट होने के बाद जैसे शाकिब ने आके अटैक किया, आते ही उन्होंने अपने शॉट्स खेलना शुरू किए। तो देखें, शाकिब इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, उनके टेरिफिक किस्म की जो परफॉर्मेंस है ना, वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, ग्रेट एम्बेसडर ऑफ द गेम। आप देखें कि उस जैसा प्लेयर जब स्कोर करेगा तो मैच जीतेंगे, मैच विनर। देखिए, मैच विनर कौन होता है? जो उस इम्पैक्ट से स्कोर करे जहां से टीम जीत जाए। तो मुझे लगता है कि अगर आप शाकिब की परफॉर्मेंस देखें, तंजीद की परफॉर्मेंस देखें, तो वो इम्पैक्टफुल थे। उन्होंने वो जोन ले लिया एज ए टीम। 160 वाज इनफ गुड टोटल, जहां पे वो उनकी बॉलिंग, क्योंकि उनके बॉलिंग के पास फास्ट बॉलिंग भी थी, स्पिन बॉलिंग भी थी, और जो सबसे अच्छी एडिशन इसमें नज़र आ रही है, विकेट टेकिंग लेग स्पिनर। तो जब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद हो, तो अगर आपने रन्स ऑन द बोर्ड लगा दिए हैं 160, जो कि इस पिच के ऊपर एक पार रन्स को टच कर रहा था, तो देन यू ऑलवेज हैव अ बेटर चांस टू विन द गेम। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश सो फार प्लेइंग वेरी प्रोफेशनली, और जिस तरह वो ये अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कंडीशन उनको सूट करती हैं। सिर्फ उनका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो उनकी बैटिंग है। जब उनकी बैटिंग पार रन्स को टच करेगी, दे ऑलवेज विल चैलेंज द ऑपोजिशन। Also, the ICC Men's T20 World Cup today, it was between Bangladesh taking on the Netherlands in a Group D clash that had oh so much context into deciding who might be that second lucky team that of course qualifies in the Super 8. So you already know that South Africa has gone through in their group, but the Netherlands and Bangladesh had both points on the board, both wanted to win the match. It was a really measured approach by Bangladesh though. They elected to bowl first, I was sent in to bat first, I should say, and in the end they managed to get the runs done with some wonderful clinical bowling efforts by their team, led by Mustafizur Rahman up the front. In the end, the poor Netherlands, they couldn't get the job done, and it was a really emphatic 25-run win to Bangladesh to keep their hope of a Super 8 alive in this edition of the T20 World Cup. Time to welcome back in my wonderful co-host Rohad Nadeem, as well as our wonderful expert panel to chit-chat about all the action we've just seen all the way over in the West Indies. So let's say hello back to Martin Guptill, Yunus Khan and Mohammed Hafiz. And Guffy, I mean, Netherlands had their chances today, which I think they'll be ruining. But after losing 3 for 6 in that run chase, Bangladesh just were all over them. Yeah, they certainly were. They were in actually a great spot to take the game really deep and win it. And that you see there was a 26 off 13, 33 off 22 and a 25 off 23. Those guys would be a little bit unhappy with themselves that they didn't push on to get a big score to see their team across the line, just as we saw Shakib do for Bangladesh in the first innings there, you know, with 64 not out of 46. So I think that's where they went wrong, is just that little period of, I don't know, it was only about 8 balls I think in the middle there where they lost those 3 wickets, and that can change a game pretty quickly, and that's exactly what happened here. You know, as I said, they were in a great spot. They were sitting, you know, looking pretty good at 111, you know, for 3, and with the game within their grasp, and they really let it slip.
Yeah, they'll be disappointed with ruining what could have been, because it really was a group, Roha, which was wide open by the fact that we've seen Sri Lanka inevitably kind of out of it, particularly with that washout in their last match. But the Dutch, we know that they can be a bit of a bogey side. They can cause a couple of upsets, but it wasn't meant to be today. And credit to the way Bangladesh played in this all-important game for them, as well as their captain was also talking about at the end of the match. It was all about keeping calm in that pressure, under those circumstances, and in that context when, of course, you know, South Africa have already qualified. Now all eyes are on Bangladesh, and today once again their batters showed, their bowlers showed why they have been so good in T20 cricket. They have been qualifying, of course, you know, for all these big tournaments, because they have been playing test cricket for decades. So it's not even a matter of if they're good, it's just a matter of them coming through in these big tournaments. And you know, as we were talking about in that pre-show as well, कि अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं, बांग्लादेश ने सारे T20 वर्ल्ड कप्स खेले हैं, बट एक बार भी वो सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं खेल सके. अब उनके पास एक मौका है और उन्होंने बहुत अच्छे से आज का मैच यूज़ किया. उनके प्लेयर्स काम नज़र आए, जैसे एरन ने भी अभी कहा, एक मेजर्ड अप्रोच की तरह नज़र आए और एग्जीक्यूट करके आए जो भी प्लानिंग उनकी हुई थी. बिकॉज सामने वाली टीम जो नीदरलैंड्स है, वो भी कोई ऐसी टीम नहीं है कि वो कोई सरप्राइजेस ना स्प्रिंग अप कर सके. उनके प्लेयर्स भी काफ़ी सीजनड है. बट टॉकिंग अबाउट runs on the board first, Yunus, 159 they were able to put up in their 20 overs with 5 wickets in hand still. और तंजीद हसन ने जैसे एज एन ओपनर किया. हाउ विल यू रेट दिस, बिकॉज ऑफ कोर्स इस ग्राउंड पे ये एक कंपैरेटिव टोटल था. बिल्कुल मेरे ख्याल से जिस तरह वो पहले यहाँ यूएस से गए हैं और उनके टफ मैचेस हुए हैं और वो एक आधा मैच बहुत ज़्यादा क्लोज जीते हैं, इसी तरह वो उनको फ़ायदा हुआ. और आज जिस तरह उनके पास हम बात करेंगे प्रेशर नहीं था, तो मेरे ख्याल से अगर वो टॉस जीतते, अगर वो बॉलिंग करते और बाद में चेस करते, तो शायद वो उन पर वो प्रेशर नज़र आता. और वो जो एक बाजू का तो चेजिंग का एक प्रेशर होता है, तो वो उन पर नहीं था. ठीक है, उनके लिए बहुत इजी था. और अच्छी बात ये थी कि जो मैं सिर्फ यहाँ पे शाकिब अल हसन की बात नहीं करूँगा, जितने भी उनके सीनियर प्लेयर्स हैं, बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें, तो किसी ना कोई एक प्लेयर, दो प्लेयर जो होते हैं वो बॉलिंग में और बैटिंग में, वो जब खड़े होते हैं और उनके इर्द गिर्द वो खेलते हैं. जैसे शाकिब अल हसन की मैं बात करूँ, तंजीम के साथ उनकी 48 रन की पार्टनरशिप, फिर महमूदुल्लाह के साथ उनकी 41 रन की पार्टनरशिप, और फिर आखिर में जैसे जाकिर अली के साथ उनकी 29 रन की पार्टनरशिप हुई. तो हम यही बात कर रहे हैं, चाहे आप पोस्ट कर रहे हो, चाहे आप चेस कर रहे हो, कोई एक बैटर आपके वो आखिर तक खेलेंगे, तब कि जाके आपके रन्स हो जाएंगे. और हमें पता है कि ये वो T20 के मैचेस नहीं हो रहे जहाँ पे 200 रन करने हैं आपने. हमने देखा आज पिच बहुत अच्छी थी, बॉलिंग के लिए भी अच्छी थी, बैटिंग के लिए भी अच्छी थी, लेकिन वो जो कैप्टनसी हुई, जिस तरह टीम बांग्लादेश के कैप्टन ने कैप्टनसी की, बड़े अच्छा. उन्होंने जब जहाँ पे स्पिनर्स की ज़रूरत थी उनको स्पिनर यूज़ किया, और जहाँ पे बॉलर जब फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत आई तो उनको वैसे यूटिलाइज़ किया. और देखो यही बात है कि जब आपके पास रन ऑन द बोर्ड होते हैं अराउंड 150 160 इस कंडीशन में, क्योंकि अगर इस टूर्नामेंट में अभी तक 200 सवा 200 रन हुए होते तो शायद ये कम लग रहे होते. लेकिन क्योंकि जिस तरह की जो मैचेस भी हो रहे हैं, चाहे आप पोस्ट कर रहे हो, चाहे आप चेस कर रहे हो, तो इतने ज़्यादा सिवाय का आधा मैच के रन नहीं हुए. तो मेरे ख्याल से वो उनका जो राइट कॉम्बिनेशन था वो उन्होंने आज सेट किया, और उनको समझ में आ गई कि अब उनको कैसे बैटिंग करनी है, कैसे बॉलिंग करनी है. तो बस वो एग्जैक्टली यही है, जब आपके सीनियर परफॉर्म करते हैं, उनके इर्द गिर्द आपके जूनियर परफॉर्म करते हैं, तो आपके लिए विन करना आसान हो जाता है. राइट, अनदर लकी डिसीजन फॉर देम टू बी पुट टू बैट फर्स्ट. बांग्लादेश के लिए आपने भी प्री मैच में यही कहा था कि इफ यू वुड विन द टॉस, आप भी पहले बैट करेंगे. वंस अगेन रन्स ऑन द बोर्ड and then the bowlers coming into action. देखिए बहुत ही मैं कहूँगा एक अच्छा डिस्प्ले है बांग्लादेश की तरफ से. Yeah, they absolutely were on song with the bat as well from ball one today. As we take a little look at the match summary, 159 is what they managed with the bat for 5 when they were sent in by the Netherlands after they won the toss and elected to bowl first. And Shakib Ul Hassan, player of the match performance, 64 red ink for him. He carried his bat throughout. His experience was so important in that total to make sure that they got to that pass score on the wicket. It has to be said, we haven't seen international cricket here for 10 years, so it was wonderful to see us back in Vincent and the Grenadines. But you know, wonderful conditions there today. Rain did spoil the party, it has to be said as well. We did start a little bit late for this match, but a full 20 over a side game was contested. And other than Shakib, Tanzid 35 of 26 and Mamadou, the experience locking down the bulk of those runs for the Bangladeshis.
Well bowled in definite parts by the Netherlands. Van Meekeren was fantastic, 2 for 15 off his 4. Ariane as well, 2 for 17, very important wickets. And Pringle, 1 for 26 off his 3. But in reply, it was a commanding victory in the end. It was hotly contested, that match, for the first 15 overs of the chase, but then the Bangladeshis broke away. They managed to restrict the Netherlands to 134 for 8. Engelbrecht, the captain, led from the front, 33 off 22. Vikram chipped in 26 off 16. But look at that bowling. Rashad Hossain, 3 for 33. What a bounce back after being so expensive in his first over. Got himself 3 very important wickets. And Taskin has been beautiful up front with the new ball. Did the damage once again, 2 for 30. And then Mamadullah gets an over, 1 for 6 from the ever so experienced all-rounder as well. But Mustafizar, that 1 for 12 was truly a match-winning innings that we'll be deep diving a little bit later. But 1 for 12 off 4 gave Bangladesh a win by 25 runs. And most importantly, Roha, as we take a little look at what that does to our pool here, with the top 2 teams, of course, progressing through to that Super 8, Bangladesh are now in prime position to snare that second spot. We know that South Africa have already qualified. Nice yellow Q sitting next to their name, sitting pretty at the top of that table. But it's all for Bangladesh to lose now in terms of who makes it through in that group as well, that all-important Group D, which coming into this tournament, Roha, was one of the ones that were very hotly contested. Let's not forget, 3 big sides in that. We have Bangladesh, Sri Lanka and South Africa, with the likes of the Netherlands, who can upset any team on any day. It was a tight pool, but I think Bangladesh, with this big win today, have just stretched away from the group. Just one step closer to those Super 8s, Bangladesh. They looked really spirited in this win. Of course, they were careful, they were measured, they weren't taking too many risks. But Shakib Al Hasan, what a match winner he has always been for Bangladesh in this format and across formats actually, you know, a number of records to his name. Once again, he showed up with his experience, seniority, and of course taking that charge. And he said in the post-match as well that it was a little bit difficult to bat in those first few overs, but then once that phase was over, it was easy, and it was a challenging score. He said it wasn't a winning total, but it was something that their bowlers could bowl at. Yeah, it definitely was. And, you know, Shakib is, you know, probably the greatest cricketer that Bangladesh has ever produced. So, you know, he's played for such a long time now. He brings so much experience. And he just played some really nice cricket shots. You know, he hit 9 4s and no 6s in his innings, and just used his timing and his placement to absolute perfection. And, you know, we see there through cover, up and over point, you know, he was just really harsh on anything that was a bit wide of him, and just threw his hands through it and picked the gaps beautifully. Little top edge there to, you know, help things along as well. But he just played calculated cricket shots. You know, he didn't try anything too fancy, and he got himself off to a pretty quick start with some maybe a little bit wayward bowling with the width that they were giving him. And you know, he's picking gaps beautifully here. Great effort on the boundary there. Used his feet to perfection and just did it really well. I mean, I feel like he could have maybe pushed a little bit harder towards from this point here. You know, 3 overs to go with 6 wickets in hand. Just felt to me like he was just pushing ones to get to his 50 and wasn't trying to up the score a bit more, leaving that to the other batter at the other end. But I just feel like he could have pushed a little bit earlier with what was happening and the position that they were in. But at the end of the day, they got a winning score on the board. And good to see the neck is all right. I mean, he was practicing with that neck brace as we saw in those, you know, just before the game started. But lucky for Bangladesh, he was just practicing something. But what was he practicing? You know, all the batters practice that. No, he's a match winner, everybody knows, you know, or he's a senior guy, and sometimes it's happen, you know, sometimes these kind of things happen. No, but how does that help when he's putting on that neck brace and in the nets? I'm wondering if he's trying to keep his head a bit still, if he feels like he's kind of wobbling around. Sometimes it's cram, sometimes sometimes it's acting. मेरे ख्याल से देखिए बाज़-औक़ात होता है क्या है कि एज अ सीनियर प्लेयर आपसे डिमांड करते हैं इफ़ यू नॉट फुली फिट समटाइम टीम नीड्स यू नो you can come up and play for your country, play for your team, especially when team needs things from you. So I think ये होता है बाज़-औक़ात, लेकिन ये है कि ठीक है वो फुली फिट नहीं थे. हमें एक न्यूज़ आई और ये बहुत बैड न्यूज़ होती है अगर वो आज नहीं खेलते, क्योंकि बड़ा क्रूशियल मैच था. अगर हम इस मैच की बात करें तो शाकिब अल हसन की परफॉर्मेंस देख लें, महमूदुल्लाह की परफॉर्मेंस देख लें. महमूदुल्लाह की तरफ से अच्छी बात है कि उन्होंने एक आउट किया, उसके बाद वो जो है आप जो 41 रन्स की पार्टनरशिप वो अनलकी रहे कि फिर आज एक ऐसा शॉट खेला उन्होंने जो कि ऑलमोस्ट 6 ही था, लेकिन वो आउट हो गया. अगर हो सकता था अगर
महमूदुल्लाह कैरी ऑन करते फॉर नेक्स्ट 2-3 मोर आवर्स, दे विल बी इजीली समथिंग पोस्ट 180। और यही होता है फिर जब जैसे वो बॉलर्स आए बॉलिंग करने आए। लेकिन मैं अच्छी बात ये बताऊंगा कि नजमुल हसन शंटू की जो आज कैप्टनसी थी ना, वो अमेजिंग थी। वो इसलिए कि देखा जब एक लेग स्पिनर आए और जिस वक्त उनके बैटर खेल रहे थे और उनके खिलाफ वो 1-2 छक्के मारे उन्होंने, मैं बात कर रहा हूँ विक्रमजीत सिंह की, उन्होंने आके 1-2 उन्होंने बिग शॉट्स खेली, लेकिन सडनली उन्होंने क्या किया, बहुत स्मार्टली महमूदुल्लाह को 1 ओवर दिया और उसने उसको आउट किया। तो मेरे ख्याल से देखें ये एक अच्छे साइन है। और फिर जिस तरह हम मुस्तफिजुर रहमान की बात करेंगे, फिर तस्किन की बात करेंगे, हमने पहले भी मैच से पहले भी हमने बात की कि वो कितना क्रूशल है। तो मेरे ख्याल से उनकी अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो सब ने चिप इन किया, और ख़ासतौर पर जब लेग स्पिनर्स मेक गेम्स फॉर यू एंड विंस गेम फॉर यू, तो वो एक जो होता है बीच में, तो जैसे उन्होंने आया 2 के उनको पहले ओवर में रन हुए 2 ओवर में, लेकिन उसके बाद जिस तरह वो दोबारा उनको यूटिलाइज हुआ, तो ये एक अच्छी टीम के साइन है। और फील्ड में एनर्जी थी उनके पास, दे वर देयर फॉर विन, so that is the it was a commendable combined effort बिल्कुल from their bowling, like we saw this morning from West Indies, and of course now we saw Bangladesh, and the captain, as Yunus said, he was using his resources just perfectly in this मैं सिर्फ match. एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, जैसे यूनुस भाई ने बात की कि स्पिनर्स विन यू द गेम्स, आप मेक अ गेम फॉर यू। आप देखें कि बड़ा राइटली बांग्लादेश की मैनेजमेंट के अंदर मुश्ताक अहमद को एज ए लेग स्पिनर, एज ए स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट ऐड किया गया। कहाँ खेल रहे हैं? वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में, जहाँ पे आपको मोस्ट स्पिनर्स की परफॉर्मेंस चाहिए। अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है या इसके अंदर कहीं पे भी एक सक्सेसफुल रन लेना है, तो यू वांट योर स्पिनर टू परफॉर्म वेल। उन्होंने क्या किया है बांग्लादेश ने, उन्होंने अपने एक रिसोर्सेज के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर मुश्ताक अहमद को एज ए लेग स्पिनर कंसल्टेंट के तौर पर ऐड किया।